The next of the 8 steps towards capacity building, logistics and so on is for food enterprises who are micro in size. We shall be providing a fund of 10,000 crores. It's a scheme which will get executed with a cluster-based approach. I recall Prime Minister Modi when he spoke on the 12th of May, speaking about be vocal for local. This is one of the ways in which the local capacities, the local value-added product can have a global outreach, can reach out for global markets and build brands. They can create products of global standards, and therefore marketing them globally will also be assisted through this fund. Most of the products that we are aiming to deal with in this scheme will be related to health and wellness products, nutritional products, herbal products, organic products, and products which are now being used as alternatives for a healthy living. So this we expect will benefit 2 lakh MFEs, micro food enterprises. 2 lakh of them will benefit by bringing them up to that level, modernizing their production techniques, giving them capacities, branding their produce and so on. But because it's going to be cluster based, I would want to broadly give you a picture of what we are aiming at. Let us say if it is Bihar, makhana is considered to be one of the very nutritious food without any calorie concerns. One can always use it as a snack. And therefore in Bihar the cluster would aim at makhana cluster. Kashmir would aim at kesar, saffron cluster. Karnataka can have ragi and coarse grains, which is today considered to be the most healthiest alternative for gluten-rich wheat and rice. So the northeast will have bamboo shoots and organic fruits. Telangana can have turmeric. We are only suggesting this because turmeric latte is a big thing outside. Milk made out of whipping cream and turmeric. So turmeric is rich in this country. There can be clusters formed. And Andhra can do chilies. Tamil Nadu can do tapioca, sago and whole lot of other things. I'm just giving examples. So the cluster based is going to focus on those organic and herbal materials or nutritional and health conscious wellness related food items in which India has a great strength. So this particular micro fund enterprises, which will have 10,000 crores given by the government, will aim at branding and promoting such clusters. The focus will be on women. Focus will be on SC and STs. Focus also, where possible, will be on aspirational districts. I forgot to add the states and the products. One Sampada, states which are rich in forestry produce, minor forestry produce, we can also have a cluster which will also benefit them. माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकल के लिए वोकल और लोकल से ग्लोबल, ये अपने आत्मनिर्भर भारत के पूरे उस दिन के संबोधन में देश के सामने बात रखी। और उसी दिशा में एक और ये बड़ा कदम है कि किस तरह से असंगठित क्षेत्र के हमारे जो सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयां हैं उनको संगठित किया जा सके, उनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की जा सके, तकनीकी उनको जानकारी दी जा सके, ब्रांड बनाने में, मार्केटिंग करने में उनको लाभ मिल सके। और इसी कार्य के लिए सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना हम ये लेकर आए हैं, जो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होगी। लगभग 2 लाख ऐसी सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयों को इससे लाभ मिलेगा। जब 2 लाख को मिलेगा तो समझ लीजिए लाखों लोग जो इससे जुड़े उनको भी रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और आय के साधन भी बढ़ेंगे। तो किसानों के लिए एक बड़ी बात ये होगी। क्लस्टर बेस पे हमने इसलिए कहा कि मान लीजिए कश्मीर में केसर है, नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू शूट्स हैं, आंध्रा में चिल्ली है, उत्तर प्रदेश का आम है, तमिलनाडु का टर्मिक है, ऐसे बिहार का मखाना हो।
तो इस सब बातों को लेकर, यानी कि सभी राज्यों को तो आज नहीं कह सकते, लेकिन हर जगह जहां जहां जो क्लस्टर अप्रोच बनाई जा सकती है, इसके माध्यम से इनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी होगी, मार्केटिंग ब्रांडिंग भी होगी, आय के साधन भी बढ़ेंगे। उस दिशा में बढ़ने के लिए 10,000 करोड़ रुपया इसके लिए प्रावधान किया गया है।